अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन जफर। यह है पॉलिटिकल जोन। पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे के करीब, इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करता हूं। वो ऐसे है कि भारतीय मीडिया का दावा है कि बांग्लादेश मुबैना तौर पे पाकिस्तान से शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हासिल करने की कोशिश कर रहा है ताकि मुमकिन भारतीय हमले के खिलाफ अपनी दिफाई सलाहियतों और डिटरेंस को मजबूत कर सके। दिफाई वेबसाइट इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग IDRW की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश ने पाकिस्तान से कम फासले पे हदफ को निशाना बनाने वाले मिसाइल अब्दाली खरीदने के लिए राब्ता किया है, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है। बज़ाहिर भारत के हमले के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए है। माहिरीन के मुताबिक कम फासले पे मार करने वाले मिसाइल अब्दाली, जिसे पाकिस्तानी फौज में हतफ 2 भी कहा जाता है, भारत के शिमाल मशरकी रियासतों के लिए एक अहम खतरा बन सकता है। इसके साथ ही बांग्लादेश ने पाकिस्तानियों के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस की शर्त खत्म कर दी है। वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दोनों मुल्कों के माबैन तजारत और सफर की सहूलत के लिए किए गए हालिया इकदाम पे बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। इससे कबल पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तकरीबन 20 साल बाद अहम पेशरफ्त सामने आई थी कि पाकिस्तान से एक माल बरदार बहरी जहाज पहली बार बांग्लादेश पहुंचा था। एक भारतीय सहाफी ने लिखा कि जिस रफ्तार से मामला तय पा रहे हैं, आइंदा 1-2 बरस में बांग्लादेश पाकिस्तान में जम हो जाएगा। पाकिस्तानी तलबा को ढाका यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने की इजाज़त भी होगी। इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी बांग्लादेशी स्टूडेंट्स के लिए 100 स्कॉलरशिप्स का ऐलान किया है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको बढ़ाना चाहिए। पाकिस्तान को 1000 से भी ज़्यादा तलबा को स्कॉलरशिप देने चाहिए। यकीन है कि आगे चल के इससे भी ज़्यादा होगा। आज इस मामले को हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर हसनैन जावेद साहब, और बांग्लादेश से अभी कुछ देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे कमरुज़्ज़मान बबलू साहब। बांग्लादेश के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं TNT वर्ल्ड चैनल के और सीनियर जर्नलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, उनकी तरफ से कुछ ताख़ीर है ज्वाइन करने में। आपके साथ ही डिस्कशन का आगाज़ कर देते हैं। ये जो सूरत हाल इस वक्त सामने आई है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आज शाम को एक हमने वो देखी, एक वीडियो एक इंडियन मेजर की। वो किसी बर्फीले मकाम पे थे, पहाड़ियों पे बर्फ पड़ी हुई थी। अंदाजा है कि कश्मीर का कोई इलाका था, और वहाँ पे वो बहुत ही, क्या कहूँ कि बुरी जुबान इस्तेमाल कर रहे थे पाकिस्तान के लिए, और द वे दे वर टॉकिंग, एक ह्यूमिलिएशन का उसके अंदर आंसर था। और लेकिन उन्होंने जो इंटरेस्टिंग बात की, उनका कि बांग्लादेश को अब आप मशरकी पाकिस्तान ही समझिए। ये फीलिंग्स हैं वहाँ पे। हम तो डॉक्टर साहब इस चैनल पे बैठ के अमन की बात करते रहे हैं, इंडिया के साथ डायलॉग की बात करते रहे हैं, पोलाइट टॉक की है, और अब भी करना चाहते हैं, ऐसे ही चलेंगे हम। लेकिन वहाँ से जो जुबान और अंदाज सुनने को मिल रहा है बहुत ही डिस्करेजिंग है। व्हाट शुड आई से। अच्छा, थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले जो आपने बात की उसमें नंबर 1 जो मुझे पॉइंट्स समझ में आए वो मैं अपने लिए एक आउटलाइन सी बना लेता हूँ। लेकिन उसके अंदर नंबर 1 जो आपने बात की वो ये थी कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान से बैलिस्टिक मिसाइल का जो है उसकी डिमांड की। अच्छा, बैलिस्टिक मिसाइल्स के पहले मैं बात करने से पहले बता दूं कि बांग्लादेश के पास जितने भी इस वक्त मिसाइल्स हैं, या जितनी भी आर्सनल है, या जितनी भी वेपनरी है, वो 86% जो है वो ऑलरेडी चाइनीज है, जब से ये उन्होंने मामलात संभाले। अच्छा, फिर दूसरे नंबर पे आपने जो गुफ्तगू की और आपने जो तमहीद दी, उसमें भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात है, उसके बारे में मैं थोड़ी सी ये बात करना चाहूंगा कि आपके सामने है कि हसीना वाजिद का बांग्लादेश और था, जिसके ताल्लुकात इंडिया के साथ थे। यानी आप यूं समझ लें कि उनका जो उस वक्त का बांग्लादेश था वो इंडिया का बगल बच्चा था। उस वक्त का बांग्लादेश जो हसीना वाजिद के पास था, उस वक्त जो है वो 90% ब्यूरोक्रेसी में हिंदू थे, और मुसलमानों का बिल्कुल निजाम, और मुसलमानों की जो है वो उनका कल्चर, उनका तौर तरीका, उनका निजाम, उनका माशरत सारी बर्बाद और तबाह करके रखती थी। यानी कि उनको उनकी ही मर्जी से निजाम चलाने की इजाजत नहीं थी। और बंगालियों को, यानी बांग्लादेश के शहरियों को, बांग्लादेश के लोगों को, बांग्लादेश के नेशनल्स को भी वो सहूलियत नहीं थी जो हिंदुओं को वहां पर मिल रही थी। अच्छा, एक तो मैं आपको ये बताऊं
कि हसीना वाजिद का बांग्लादेश और था, खालिदा जिया का बांग्लादेश जो था वो पाकिस्तान के साथ था, और फिर उसके बाद हसीना वाजिद दोबारा आ गई और हसीना वाजिद का जो बांग्लादेश था वो दोबारा जो है वो मोदी की गोद में चला गया। अच्छा, आज मैं एक और आपके सामने बात करना चाहता हूं, आपको इस मौके पे खुशी का मौका है, बहुत खुशी का मौका है, लेकिन मैं सारी एप्रिसिएशन डॉक्टर यूनुस को देना चाहता हूं, लेकिन इस खुशी के मौके पे जहां मैं ये कह रहा हूं कि हसीना वाजिद का बंगला जो था वो भारत के साथ था, खालिदा जिया का बंगला पाकिस्तान के साथ था, फिर हसीना वाजिद का बंगला जो था वो फिर इंडिया की गोद में चला गया, यानी टोटल इंडियन हेजमनी थी। और फिर इसके अंदर जो सबसे बड़ा नुकसान किया हसीना वाजिद ने वो सार्क का किया, यानी इंडिया अपनी हेजमनी कायम करना चाहता था, इंडिया चाहता था वो अपनी नेबरिंग कंट्री के ऊपर जो है वो इस्तेहकाम हासिल कर ले, यानी चीन और भूटान और श्रीलंका और बाकी उनके ऊपर भी जो है वो गलबा पाए, इंडिया नहीं, सॉरी चीन नहीं। अच्छा, इसी तरीके से वो अपनी हेजमनी कायम करना चाहता था, और वो सार्क का सिर्फ मेंबर इसलिए था और सार्क को लीड इसलिए करना चाहता था ताकि इन तमाम छोटी रियासतों के ऊपर, ये छोटे ममालिक जो उसकी नेबरिंग कंट्रीज हैं, इनके ऊपर जो वो अपनी हेजमनी कायम रखे। और वो इसलिए जो है वो कोई मीटिंग कॉल अप अब नहीं करता था, क्योंकि उसका एक वोट होता था या हद दो हो जाते होंगे, लेकिन पाकिस्तान ने यकीनन एक बड़ा दिफा किया। आज मैं इंपॉर्टेंट बात जो मैंने बार बार दोहराई, जिस पर मैं यकीनन खुश नहीं हूं, कि आज आपने देखा कि क्या, आप मुझे पहले नंबर वन आप ये बताएं, क्योंकि मैं पहले जरा सियासत को टेकअप करना चाहता हूं, फिर मैं उसके बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर भी जाऊंगा। ये डॉक्टर यूनुस का बड़ापन है, डॉक्टर यूनुस एक अजीम आदमी है, डॉक्टर यूनुस ग्रामीण बैंक का खालिक है, डॉक्टर यूनुस एक इकोनॉमिस्ट है, डॉक्टर यूनुस एक समझदार तरीन आदमी है, डॉक्टर यूनुस एक पेट्रियट आदमी है, जो डॉक्टर यूनुस ने अपने मुल्क के लिए एक सख्तियां झेली हैं, उसने जेलें काटी हैं, उसने हसीना वाजिद का जुल्म सहा है, और उसने जो है वो आज जो पाकिस्तान और इन सारे मामलात को नजरियाती असास दी है, उसने वुमेन एम्पावरमेंट की है, उसने अपने ग्रामीण बैंक के निजाम के अंदर जो कॉटेज इंडस्ट्री का अजीम मंसूबा था वो आज लाके खड़ा किया, और अजीम बांग्लादेश बनाने में उसके नजरियात को आप साइड पे नहीं कर सकते। तो मैं डॉक्टर यूनुस का आपके ही चैनल पे मेरी डॉक्टर यूनुस की पूरी मुकम्मल बायोग्राफी के ऊपर बात मैं कर चुका हूं ऑलरेडी। आई रियली एडमायर दैट मैन, अ रियल मैन, आई सैल्यूट हिम। अच्छा, उसके बाद मैं बात करता हूं, अफसोसनाक बात यह कि क्या शहबाज शरीफ की तरफ से लिखा गया था कि हमें सार्क पर पेशरफ्त करनी चाहिए? आपसे सवाल है मेरा। नहीं, ये डॉक्टर यूनुस साहब की तरफ से आया था। अच्छा, क्या ये कहा गया था कि जो आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, जिसका कोई रोल नहीं होता, जिसकी सिंबॉलिक पोजीशन होती है, जो अपने नाम के साथ फॉरेन मिनिस्टर के फराइज अंजाम नहीं दे रहा, वो अपना डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नाम दिखाता है, नाम का टाइटल देता है, जिसकी सिंबॉलिक पोजीशन है, जिसका कोई पोजीशन तो है नहीं, उसकी कोई एग्जीक्यूटिव पोजीशन नहीं है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। मुझे ये बताएं कि क्या उसने ये कहा था कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, क्योंकि वहां से जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो कॉटन पैदा होती है, क्या हम उसके लिए जो है वो मामला बेहतर करें? क्या इनकी तरफ से लेटर या यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग गया हो, या एग्जीक्यूशन गई हो, या ट्रेड का फ्रेमवर्क गया हो कि उन्होंने कहा हो कि मैक्सिमम ट्रेड बिटवीन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान वो खुलनी चाहिए, जो कि वाया इंडिया जाती थी? मेरे ये चंद सवालात का आप जवाब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे सर? अच्छा, अब ये सवालात जो आपके सामने रखूंगा तो फिर आप मुझे बायस नहीं कहेंगे। मैं ये कहने चाह रहा हूं कि जब आपके इसहाक डार की तरफ से फॉरेन पॉलिसी बनाई नहीं गई, सार्क के ऊपर बुलाया नहीं गया, शहबाज शरीफ ने सार्क पर कोई बात नहीं की, उसकी हेजमनी को दोबारा से कायम करने की कोशिश नहीं की गई, पाकिस्तान और बांग्ला के बारे में उसने इकट्ठे होने की बात नहीं की, और 1 बिलियन की अगर ट्रेड होती है तो उसको बढ़ाने की बात नहीं की, फ्रेमवर्क नहीं की, हम किन किन बुनियादों में आपस में काम करेंगे और हमारा जो है वो ट्रेड बैलेंस। भी आई है डॉक्टर साहब कि लोग यहाँ पे आते हैं मंसूबा लेके, इनके पास फिजिबिलिटी बनी हुई नहीं होती है। आई डोंट नो कि ये इस्लामाबाद में मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाहता, ये तो ऑलरेडी कोलैप्स, ये तो ऑलरेडी कोलैप्स है। लेकिन जो मैं असल, यानी ये गवर्नमेंट तो कोई गवर्नमेंट नहीं है, मुझे इस वजह से मुझे खुशी इस बात की कि डॉक्टर यूनुस ने पाकिस्तान को बुलाया। मुझे खुशी इस बात की नहीं है कि जो मेरी हुकूमत कही है उसमें शहबाज शरीफ डॉक्टर यूनुस के सामने एक नजरियाती, एक इंटेलेक्चुअल सतह पर, एक यानी इंडिया का बच्चा बन के, वो शहबाज शरीफ इंडिया का बच्चा है मेरी मुताबिक, वो उसी तरह है जैसे हसीना वाजिद है, मेरी मुताबिक इसहाक डार ऐसे ही है जैसे हसीना वाजिद है। तो मेरे मुताबिक अगर
आज इमरान खान बांग्लादेश जाता तो उसका पुरतपाक आप इस्तकबाल देखते और आज हैरान होते और आज वाकई खुशी का मुकाम होता और आज देखने वाली बात होती कि जिस बात बारे में बात की, जिस तरीके से बांग्ला ने अपने मुल्क के अंदर बात की। देखें बांग्ला के अंदर क्या हुआ, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि मुझे बड़े अफसोस से एक बात की खुशी है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को वेलकम किया, पाकिस्तान को वेलकम किया। दूसरी मैंने आपको बताई कि क्या फॉरेन पॉलिसी की इनपुट तो शहबाज शरीफ की तरफ से है ही नहीं, ना इसहाकदार की तरफ से। ये दोनों लोग जो है वो क्रेडिट किस तरह से ले सकते हैं? जितनी बात हुई पाकिस्तान से हुई, ऑफ कोर्स डिप्लोमेटिकली बात तो करनी है, चाहे आपका बदतरीन दुश्मन और आपको बिल्कुल पसंद भी ना हो, लेकिन जस्ट आई एम वेटिंग कि इमरान खान जब आएगा कि उसका निजाम क्या होगा। अच्छा, तीसरी बात जो आपने की, पाकिस्तान जो इंडिया ने इतने बड़े डिसीजंस लिए, क्या उसकी तरफ से पाकिस्तान की तरफ से कोई बड़े जो स्टेटमेंट्स हैं वो आपने शहबाज शरीफ की तरफ से सुने? अच्छा, मसलन मैं आपसे ये पूछूं कि पाकिस्तान तोड़ने वाले मुफ्ती बानी रहनुमा को बांग्लादेशी अवाम ने जूतों का हार पहनाया, इसके ऊपर आपने कोई स्टेटमेंट सुनी कहीं से, किसी ऑफिस से, किसी हमारा मेन स्ट्रीम थोड़ी थोड़ी वो सारा दिन आप जानते हैं क्या डिस्कशन होती है। अच्छा, वो फिर इसके बाद जो है अब सबसे बड़ा सब्जेक्ट ये था कि जिसपे दाद देनी चाहिए थी कि बांग्लादेश ने दरसी कुतब बदल दिए और आजादी का सेहरा मुजीबुर रहमान से छीन लिया गया। उसने बताया कि जियाउर रहमान कौन था, खालिदा जिया का जो था। अब बांग्लादेश का मुआवजना, अच्छा फिर मोटी बात उन्होंने की कि बांग्लादेश का मुआवजना अफगानिस्तान से ना किया जाए क्योंकि डॉक्टर यूनुस एक बड़े सेंसिबल आदमी है। उन्होंने, अच्छा अब उसकी बुनियाद पर चीन है, लेकिन वो चीन की बुनियाद के ऊपर कैसे ताल्लुकात रखेंगे? लोग अभी तक परेशान हैं कि जब रिजीम चेंज हुई तो उनका ख्याल था कि शायद अमेरिका इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन कंफ्यूजन ये है कि डॉक्टर यूनुस तो एक इंडिपेंडेंट आदमी की तरीके से काम कर रहे हैं और चीन की वन ऑन वन उनके साथ मामला है, वो तो ट्रायलेटरल रिलेशनशिप। ये कहना कि ये अमेरिका की वजह से हुआ, चीन की वजह से हुआ, ये बांग्लादेशी अवाम के लिए एक इंसल्ट है। वो खुद अवेयर लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे काबिल लोग हैं, एंड दे आर पॉलिटिकली अवेयर। उन्होंने खुद फैसला किया है कि उनको क्या करना है। नोबडी इज डिक्टेटिंग देम। हमें ये इजाजत नहीं देनी चाहिए कि कोई ये कहे कि वो किसी के कहने पे चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं जो आपको अर्ज कर रहा हूँ वो ये है कि कमाल की बात ये है कि इंडिया का होल्ड हट गया, इंडिया कमजोर पड़ गया, इंडिया खत्म हो गया, इंडिया फिनिश। इंडिया ने जो कॉलोनी बना के रखी थी और ये अब इंडिया की बारी शुरू हो गई है शूदर बनने की। ये जो शूदर बनाते रहे हैं लोगों को, खुद शूदर थे तो शूदर बनाते रहे। डॉक्टर साहब मुसलसल झूठ बोलते रहे कि पाकिस्तान के 90,000 फौजियों ने वहां सरेंडर किया। हम जानते हैं वहां सिविलियंस भी थे, कितनी बड़ी तादाद थी और किन हालात में क्या हुआ था, कौन किसके पीछे खड़ा हुआ था। और ये हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट, मैं तो मैंने एक प्रोग्राम में ये अर्ज किया था कि मुझे तो उसके ऊपर भी शक है कि इट वाज ऑल कॉन्कॉक्टेड, गलत उसमें बयानात और सारा कुछ किया गया। वो एक सिलसिला अलग है, उसके ऊपर मैं मजीद गुफ्तगू करूंगा। लेकिन आज वही मिलिट्री गई है ना, उसको डॉक्टर यूनुस ने बेहतर समझा है ना। आज उनकी मिलिट्री को हम ट्रेन करेंगे ना। आज जब हमारी मिलिट्री एक होने जा रही है तो इंडिया को समझ जाना चाहिए कि भाई ये तुम्हारी साजिश थी, ये हमूदुर रहमान पैदा करने वाले तुम थे, हमारी मिलिट्री नहीं थी। वो समझ गए हैं, वो हमसे पहले समझ गए। वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश नहीं, अब आप इसे मशरकी पाकिस्तान ट्रीट करें। आप ये समझ लीजिए कि ये 71 का जो सारा मामला है और इसके बाद एक बेईमान किस्म का सहाफी नजम सेठी और बाकी जो इन्होंने यहाँ पे मीडिया बाय कर रखा है, उन्होंने कहा, मैं सर नाम लूंगा ना सर, मुझे किसी चीज का डर है क्या? मुझे तो, मैं डॉक्टर यूनुस झूठ नहीं बोलता था, डॉक्टर यूनुस नाम लेता था, चुनाचे आपको नाम लेना पड़ेगा। नजम सेठी और बाकी सारा मीडिया झूठ बक रहा है और बकता चला जा रहा है और वो ये लिख रहा है कि बांग्लादेश जो है वो उन्होंने कहा है कि सबसे पहले वो माफी का ऐलान करे, वो 71 में जो हुआ उस पर माफी मांगे। ऐसी कोई बात नहीं हुई, ना होगी, क्योंकि हकाइक डॉक्टर यूनुस के सामने है। जी जी डॉक्टर साहब, मैं हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं बांग्लादेश से कमरुज़्ज़मान बबलू साहब। वो इनका ये कनेक्ट नहीं हो सका, हमारा सिस्टम स्ट्रीमयार्ड का, तो हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब ज्वाइन करने के लिए कमरुज़्ज़मान साहब। Yes, thank you very much. ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप बताइए, हम आपके हवाले कर रहे हैं। आई होप कि यहाँ से आवाज हमारी सही कनेक्ट हो जाए।
If you can speak a little louder. So, Yes. and we were told that you understand Urdu very well, but you are not very So let's continue comfortable the in discussion speaking. in English. So, Ask you the please question go in ahead. English so that everybody can You understand. can continue your discussion in English as you like. So, Dr. Saab, let's give him an open chance to speak. Yes. What do you think, Bablu Saab, about this defense relations between Bangladesh and Pakistan, which is being discussed very widely now? Yes, thank you very much. Am I audible to you? Yes, it's good. It's good. Please go ahead. Thank you very much. Actually, Bangladesh and Pakistan, very friendly countries. Even the diplomatic policy of Bangladesh, that is constitutionally acknowledged here, is the friendship to all and malice to none. But unfortunately, during the regime of Sheikh Hasina, Bablu Saab, I think I'll call you from another. I'll call you from another line which has better audio. So just give me a minute. I'm calling you back in a second. Okay, no problem. Right. Dr. Saab, let me connect with him again. Abdul Saab, yes. So you can, within the meanwhile, maybe you can continue. आप उनसे मिलाते जाएं, आप उनसे Okay, बिल्कुल he's सुनें. with us. Yes, this is better. Do you Yes. hear me now? Yes, we can hear you now. This is better. Yes. Bablu Saab, you please go ahead. This is about Bangladesh-Pakistan defense ties. We have reports that Bangladesh has asked Pakistan to provide short-range ballistic missiles. How does it look to you? Yes, please go ahead, sir. Yes, it's a fantastic news, and Bangladeshi people, most of the people, they welcome this decision. And after hearing this news, people are so happy. Actually, in the last 15 years, during the regime of Sheikh Hasina, people were oppressed due to the hegemonic foreign policy of neighboring India. Even border killings were very common here. And many innocent and civilian Bangladeshi people have been brutally murdered since the independence of the country by Indian border security force inhumanly. So people were actually unsafe. So people feel that Bangladesh is an independent country and Bangladesh have the right to friendly behave with other neighboring countries. But unfortunately, Bangladesh was oppressed by Indian foreign policy, and even there are one-sided business controlled by India, Bangladeshi port and Bangladeshi seaport and other ports are used by India in a very unfriendly way. So people were eagerly waiting for a change. And after the mass uprising and the students' movement, the Sheikh Hasina regime has been fallen on August 5, and Sheikh Hasina fled to India, you know that. So now people are very much eager to boost the relationship with all other countries, friendly countries, and this type of decision or defense support from Pakistan will enhance the defense sector of Bangladesh. That means that Bangladesh can say that we are capable and we are. And Bablu Saab, I have a question for you. We want friendship, not any big brother-like behavior from any Bablu Saab. country. So in that case, it's a very, very good progress. Yes, thank you very much for your answer. Bablu Saab, we have Dr. Hasnain Javed Saab with us. He wants to ask you a question. Thank you. So first, I wanted to appreciate and congratulations. You are out of the hegemonic and the most, cunning India, and I would say it's a cynical India. So now I would really congratulate. First, let me know, please. My question is about the SAARC and the Dr. Yunus idea about reviving the SAARC. What do you say about it? Yeah, Bablu Saab, can you hear the question? Yes. Yes. Thank you very much. Actually, after coming to power, you know that
after such a revolution. So the spirit of the July and August movement, for which nearly 2,000 people, mostly students, sacrificed their life, and thousands are injured, and many are still suffering from after losing their eyesight and other organs of the body. So the spirit is that Bangladesh will survive as a independent and capable country. And actually the people, Bangladeshi people, are so much fed up due to the Indian attitude for the last 1.5 decade, especially during the regime of Sheikh Hasina, who's the India considers as their loyal puppet. So people are interested to see a change. And after coming to power by Dr. Muhammad Yunus, who is a very global figure, so people's expectation was that Yunus will be able to avoid any big brother-like attitude by any country, and Yunus can take or adapt foreign policies independently. And as a part of that expectation, Dr. Yunus has taken decision to boost the friendly relationship with all countries, including Pakistan, Turkey, and other countries. And this administration is fully ready to avoid any hegemonic policy. If India spread its hands with friendly attitude, considering Bangladesh as an independent country, not as a loyal puppet of their country that was during the regime of Sheikh Hasina. Yes, yes. People are now happy with this change. Yes, Babu Sahab, how threatened do you feel by India at the moment after this regime change? How threatened is Bangladesh feeling with Indians? Actually, after the regime change, there were many misinformation, disinformation spread by the Indian media on a massive scale, and they were trying to make some political issues as the issue of torturing on minority Hindus. That was fully false. Actually, after the regime change, there were some political chaos, and that's very normal. During the regime of Sheikh Hasina, hundreds of people were the victims of enforced disappearances and extrajudicial killings. So there were angers in the people who were deprived for the last 1.5 decade. So there were some natural reactions, and the people who were the oppressors using the political identity as the part of the ruling Awami League party. So there are some Hindus also. So there are some political conflicts and chaos. But unfortunately, Indian media massively use those political incidents as the torturing on minority Hindu community, and they try to propagate it all over the world. And even some Western media and even US president also issued a statement. So now the big challenge from India, Bangladesh feels is that propaganda and the spread of misinformation, disinformation, this is a big challenge for Bangladesh now to face, and India will try to restore the previous regime, like they will try to set here someone who will play a role like a loyal puppet as played by Hasina. So India will continue this effort for their sake, but this is a very big challenge for Bangladesh, because Bangladesh is a small country, surrounded from all sides by India, and then another side only Bay of Bengal. So it's a very big challenge for Bangladesh now, how Bangladesh will address the hegemonic policy of India in the coming days. Yes. So the real threat is there. You feel surrounded by the Indian forces. The moment, Dr. Saab, do you have a question for Abu Saab? I repeat my question. I was asking about that. What is that? Your view, Mr. Bablu, about the reviving of the SAARC. Because Dr. Yunus is, keen to revive the SAARC. Bablu Saab. Yeah. Thank you. You know that this SAARC, this is the regional body for cooperate each other, the South Asian countries, and late President Zia Rahman was actually the main initiator of this. But unfortunately, from the very beginning, India was trying to oppose the idea of SAARC, and
Even in the last till 2012, there were SAARC summits, and I even also covered the SAARC summit in Maldives, in Nepal. But unfortunately, the SAARC summits were stopped mainly due to the role of India. So now we are also expecting, the Bangladeshi people are expecting that the activities of SAARC will be revived. But Bablu Saab, there's a initiative. problem here. When it comes to SAARC, India wants to be treated as the big brother, not as an equal of other nations in SAARC countries, in SAARC organization. That is the problem. How do you see that? Yes, of course, that's a problem. But in that case, I think either other members of the SAARC, they will try to convince India, or if India continue this big brother-like attitude, then in that case, all other SAARC members can unitedly raise their voice. Yes, and in that case, for sure. that will be a very strong diplomatic pressure on India, and then India will also act accordingly as equal country of the SAARC. So united effort and united voice of other members of SAARC is very much important here to avoid this big brother-like attitude of India. Yes, yes. One more thing, Bablu Saab. There has been a propaganda on Indian media that after the toppling down of Hasina Wajid's regime and the way things developed between India and Bangladesh, the Bangladesh economy has gone down. It has immensely suffered because the kind of support India was providing in terms of electricity and raw material and whatever that was. There's a huge propaganda that Bangladeshi economy was largely depending on the Indian support, and once that is out, Bangladeshi economy is toppling down. Is that correct? No. Actually, it's not correct. Even huge number of Bangladeshi people every year went to India for treatment, and Bangladeshi people, after going there, they used their hotels, they bought from their market. So even there are also reports on social media still now that Indian businessmen in many regions, they even are expressing their frustration that as Bangladeshi people are not coming now like the previous way, so their businesses is losing. And even Bangladesh was the second biggest market of India for earning foreign currency. So it's not a loss of Bangladesh. Actually, this is the loss of India. But problem is that, yes, in some cases like onion and some other products that Bangladesh took from India, but the other countries, even Bangladesh, now importing onions from Pakistan, Turkey. So actually, this is not at all problem for Bangladesh. Rather, it's a loss of India. So they are spreading propaganda so that they can put pressure on Bangladesh and they can morally weak Bangladesh. But it's not acting, and people are so much aware about it. So people are not at all worried about this propaganda. Right. So as Kamru Zama Saab understand the Urdu as well. So I'll speak Urdu and I'll share a few information in Urdu so he can also understand and he will reply in that way. So Kamru Zama Saab, are you allowing me to speak in Urdu? Kamru Zama Saab, Dr. Hasnan Javed Saab is continuing with his commentary in Urdu, and maybe he would like to ask you. You understand Urdu? You can respond in English. Or should I continue with English? Okay. All right. Okay. Yes, Dr. Saab, please. Right. So अभी देखें कि सबसे पहला सवाल ये कि my main question about the trade. So now the direct trade between the Bangladesh and Pakistan. How would you say, Dr. Yunus, go in what direction on the direct trade with Pakistan? Ji. Bablu Saab. Okay. Yes, direct trade with Pakistan. The direct trade with Pakistan. Yes. Yes. Actually, there is huge prospect because even I have had the opportunities to visit Pakistan 3 times. So I saw there are so many common products that Bangladesh are using Indian fans, Indian ceiling fans,
and Indian other products, Indian clothes, Indian three pieces. So there are huge demand of in Bangladesh, India, Pakistani products. So both countries, and in that case, what is very much important that we also mentioned during our Pakistan tour is that direct flight. If there is a direct flight, cargo flight, starts between these two countries, then the business volume will be, of course, increased. And you know that in the last couple of months after the toppling down of Sheikh Hasina, there were some big ship that came from Pakistan to Bangladesh. So a huge number of necessary products they come from Pakistan to Bangladesh through ships, and Bangladeshi products that Pakistan needs can go through those ships. So there is a huge prospect, and Dr. Yunus and the interim government is trying to ensure the maximum use of all these opportunities to boost the bilateral trades between these two Muslim brotherly because before that, Kamran Samasa, before that, you have observed that, I mean, the whole trade is via, UAE. Now we need to, recall and revive our foreign policy too. For example, our foreign policy is very much dependent on Saudi, and we were not getting anything out of it. Our foreign policy is dependent on the UAE. We were not getting anything out of it. So in the same way, the Bangla was not getting anything, and the India route everything from the UAE to Bangladesh. Now that there is a trade barrier. There was a trade barrier. Now there is no trade barrier. Now we can have a direct trade between the China, Pakistan, and Bangladesh. Now the trade scenario is altogether very much changed, and the whole situation has been changed. And also, please answer and respond to that thing. Then when the China was, asked you about the, when it was the development of the Quads, and they intimate Bangladesh at the Hasina Wajid time not to be the part of Quads. But of course, at that time, the situation was different. Now it is completely out of the Quads, because Quads is completely against the Belt and Road Initiative, China, or it is in the favor of the Bangladesh and Pakistan. What do you say, and what would be your response? Kamran Samasa, did you hear the question correct properly? Yes. Yes. Do you hear me? Dr. Hasnan is asking about Bangladesh's participation in Quads, because India was a hurdle in the way to join Quads. Is there a possibility that Bangladesh can join Quads, and Pakistan and Bangladesh can have direct trade relations instead of rerouting their products through UAE or any other port? Yeah. Of course. I already said it. And yes. Even there is huge prospect of it. The direct flight is very much important. Even some back, a Bangladeshi team of journalists visited several provinces of Pakistan, and in all meetings between the Bangladeshi visiting team and the Pakistani officials, this issue was raised seriously. Even at that time, Sheikh Hasina was the prime minister, so it was difficult, but it was the concerns of the team and all Pakistani officials. So direct flight is very much important now. So there is no via. In that case, the travel cost will be lessened, and the volume of trade will be increased. So it's very much important now. And in that case, as there is a very friendly government in Bangladesh now, and hopefully after the election that may be held after 1 year or within 1 year, the government that will come will also be very positive, and that will that any government in the coming days will not be loyal to any hegemonic policy of India. So there is a long-term prospect of starting direct flight between Bangladesh and Pakistan, and of course the trade volume will be increased in that case. So now what needs actually from Pakistani side, the businessmen and other diplomatic officials should come forward with the proposal, and also Bangladeshi
Bangladeshi officials now, they're also ready. But you know that during the 15-year-long regime of Sheikh Hasina, all these sectors like bureaucracy and other government officials, foreign ministries, and all other ministries officials were recruited by Sheikh Hasina. So there are so many. That's very important. People. Yes. So Bablu sir, one more thing. I don't mean to interrupt you, but one more thing. There is a general idea in the Indian narrative at the moment that when the elections are held in Bangladesh, they can perhaps find their way through. Find some space for influence in the Bangladeshi politics and Bangladeshi affairs. In their dreams. Yes. What do you say to that idea? That after the elections are held, they can again find some space in Bangladeshi politics and Bangladeshi affairs. Is there a actually that is not possible now, because you know that the movement that was held in July and first week of August, it was the spontaneous participation of the young forces here who took the life risk without any fear. So people are now fully ready. Maybe there are some divisions, there are some difference in opinions, but doesn't matter. But all the people are united against the fascism that was established by Sheikh Hasina regime. So people are so much united against all type of fascism, and so they believe. So people of Bangladesh believe that India is a fascist government, and they don't want to have anything to do with that. Actually, Sheikh Hasina established fascism here by the support of India. And you know that there are 3 elections under Sheikh Hasina, 2014, 2018, and 2024. And all the elections were completely farcical. And even ballot were stuffing on the previous night, ballot boxes. So there were so many irregularities and boycotted by all opposition parties. But India nakedly supported those elections. So fascism was established here in Bangladesh with the direct support, naked support of India. Excellent. And they have the audacity to talk about democracy and rights with the rest of the world. Look at them. One more thing, Bablu Saab, a little difficult question between Bangladesh and Pakistan is pertaining to the history. At the moment, what we see is that we have contact between the two governments in Islamabad and Dhaka. But when it comes to people-to-people contact, there are ideas put into young people's mind and old people's mind through, the Hamoud Rahman Commission report was published in India, and whatever is written in that report. Do you think there is a need to? It's all finished. I think there. You asked the question. Both nations can. No more relevant. What do you think both nations can do to correct that history? Actually, on this issue, there were massive propaganda during the regime of Sheikh Hasina. Even actually, the Hasina's the main weapon of Hasina for doing politics here was to spread the hatred against Pakistan using the 1971 issue. Excellent. But the young generation, they are very aware, and they know that after 5 decades, that should not be a bar in diplomatic relationship. You know that in the Second World War, there were atom bomb in Japan by United States, but now they are working together. But actually, due to the massive propaganda in the last 15 years, and there were even in textbook, there were many misinformation, disinformation. So the young generation are completely was in dark. Yeah. But after this revolution, there is the eyes has been opened. So people now want friendship. People now are not ready to stick on an issue 5 decades back. But as this is a matter of emotional, so Pakistan and Bangladesh, both governments should sit together, discuss on this issue frankly, and they can issue a joint statement regarding that issue. Yeah. Okay, and they can say that, okay,
whatever the bitter experiences we had, but now we want to go together, we want to develop together in this world of globalization. We shouldn't use a past issue on a massive scale to misguide the people. So now, as it's a matter of emotional, there were incidents of killings and some other incidents of human rights violations. So it's true. So people have emotion on it. So both countries should sit together and discuss on this issue and issue a joint statement to stop this issue permanently, and then once and for all. Once and for all, this should be buried once and for all. एक चीज डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी आपने सारी बात सुनी, कैसी कैसी बातें, कैसा प्रोपेगेंडा होता रहा है बांग्लादेश और पाकिस्तान के मामलात को लेके, कैसी बातें कही जाती, टेक्स्ट बुक्स में डाल दिया गया और क्या किया जा सकता था, बच्चों को पढ़ाया गया, ये सब कुछ सारा झूठ। अब ये सिचुएशन है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के को स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम की बात हो रही है, हमारे पास है कि जी कोई 1000 बच्चे वहां से आएंगे, कुछ यहाँ से जाएंगे। ये पीपल टू पीपल कांटेक्ट और इमोशनल कांटेक्ट दोबारा एस्टेब्लिश करने के लिए आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब? सर बात ये है कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैंने जिस तरह का कहा कि फौरी तौर पे वो जिस तरीके से आई रियली अप्रिशिएट कमरुज़्ज़मान साहब जिन्होंने 1971 की बात क्लियर कर दी, वो यंग नेशन को बात कर रहे थे और हसीना वाजिद ने वो नैरेटिव बिल्ड किया और उस नैरेटिव के अंदर कोई जान नहीं थी। अभी पॉइंट ये है कि ये सारा तमाशा खत्म हो चुका है, बांग्लादेश और पाकिस्तान। और इसके बाद मैं आपको एक और बात बताऊं, जितना बंगालियों को इस्लाम से मोहब्बत और पीसफुल इस्लाम से, एक टेररिस्ट इस्लाम से नहीं, ये मुद्दवता नहीं है, ये हिंदुस्तान की जो है वो रजियत पसंद किस्म की जो है वो सरकार नहीं है जो कि सिर्फ जुल्म और रॉ के अलावा उसने और कोई काम नहीं किया और बांग्लादेश को सिर्फ सप्रेस किया और पाकिस्तान को तबाह किया, पाकिस्तान के निजाम को बर्बाद किया। अभी कैसे बेहतर होने वाला है वो देखने वाली बात है। सबसे पहले तो आई रियली अप्रिशिएट कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस की शर्त को खत्म कर दिया। मेरा ख्याल कमरुज़्ज़मान साहब भी सुन रहे होंगे। बांग्लादेश की 10 किताबें बदल दी और आजादी का सेहरा मुजीबुर रहमान से छीन दिया। दे आर नाउ पॉलिटिकली करेक्ट, इंटेलेक्चुअली करेक्ट और हर लिहाज से उन्होंने करेक्शन की तरफ लेकर आ गए। अच्छा, बांग्लादेश का मौजना अफगानिस्तान से ना किया जाए, डॉक्टर यूनुस, अच्छा इसके ऊपर भी जो है वो कमरुज़्ज़मान साहब से इसको जरा थोड़ा आई नीड अ लिटिल मोर एलैबोरेशन ऑन दैट, बिकॉज़ उन्होंने ये बड़ी पॉइंट के साथ मजबूती के साथ लिखा है कि देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन द बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान, सो डोंट मेक इट अंडर द सिमिलर अम्ब्रेला। सो ढाका यूनिवर्सिटी में पाकिस्तानी तलबा पर जो आयत पाबंदी थी वो खत्म की। हैट्स ऑफ टू डॉक्टर यूनुस, आई रियली अप्रिशिएट दैट जेंटलमैन। और बांग्लादेशी अवाम, the people of the Bangladesh, I really appreciate the people of the Bangladesh। उर्दू में कहते हैं कि हकीकत अपनी जबिलत की तरफ आती है, हकीकत अपनी हकीकत की तरफ आ चुकी है और हमारे दरमियान में ना नफरत थी ना है, और जिन लोगों ने बिल्ड की है उनकी वो जो है वो हमूदुर रहमान कमीशन जो है वो कब्र के अंदर चला जाएगा। इसी तरीके से जो है वो भारत ने बांग्लादेश के सफारती मिशन पे जो हमला किया हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। और उसके ऊपर आप ये सवाल करें कि किस बुनियाद के ऊपर आपने बांग्लादेश के ऊपर वो हमला किया था, आपने सफारती मिशन के ऊपर हमला करने की जुर्रत कैसे की थी। फिर उसके अलावा जो है सवाल अब एक और भी बदल जाएगा, अब जो है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप को तब्दील कर लेगी क्योंकि अब वहां पे राज खुल चुका है। जो इंडिया ने लॉबिंग वहां पे की थी उससे पहले ट्रंप ने ये कहा था कि बांग्लादेश की फेवर में उसने कोई बयान नहीं दिए थे ताकि हिंदू वोटर्स मैक्सिमम आए, लेकिन अब जब बात क्लियर हो चुकी है और इंडिया उस वक्त मुसलसल ये कह रहा है कि इंडोफोबिक हो गए, इंडोफोबिक नहीं हुए, असल में उसने वो जो मिसकंसेप्शन मिसपरसेप्शन क्रिएट कर रखी थी और ये सारी की सारी जो है वो फितना परवरी और हिपोक्रेसी जो कायम की हुई थी जिसकी बुनियाद पर गलत इंफॉर्मेशन एक दूसरे को पास ऑन हो रही थी, ये इंडिया ने की थी। चुनाचे अब वो खत्म। अब हमारे साथ जो दिफाई मुआहदा है वो अभी कमरुज़्ज़मान साहब भी सुन रहे हैं, मैं तेजी से बता देता हूं। अब हमारे साथ जो दिफा का सबसे है, ये सिर्फ दिफा नहीं है, एक तो सार्क सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। आई रियली अप्रिशिएट डॉक्टर यूनुस के जिन्होंने पाकिस्तान को बुलाया। अब जब हमारा इमरान खान आएगा इससे ज्यादा जब वजारत उस्मान, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूं हसीना वाजिद का बंगला और था, खालिदा जिया का बंगला और है, डॉक्टर यूनुस का और है। इसी तरीके से हमारा प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर ना समझिए, पाकिस्तान के साथ ताल्लुक है, लेकिन जब हमारा प्राइम मिनिस्टर वाकई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जब आएगा तो और ज्यादा पीपल टू पीपल कांटेक्ट होगा और ताल्लुकात होंगे। अभी
दिफाई लिहाज से हम एक हो चुके हैं और 86% से ज्यादा चाइना का जो है वो दिफाई निजाम वहां पर मौजूद है। और इसके साथ जो है उन्होंने जो 400 किलोमीटर यानी एग्जैक्टली भारत को रेंज करने वाले हमारे अब्दाली, जिसको हम हतफ 2 भी कहते हैं, उन्होंने डिमांड कर रखी है। दूसरी बात मैं बता चुका कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान से सिक्योरिटी क्लियरेंस की बात खत्म कर दी, ये एक क्लियर बात हो गई। बांग्लादेश की जो खारजा पॉलिसी है और पाकिस्तान से करीब से भारत में जो तशवीश है, सबसे ज्यादा परेशानी इस बात की है भारत को, वो परेशान है, वो घबरा रहा है, वो रो रहा है, क्योंकि सार्क में छोटे ममालिक को वो दबा रहा था। अब उसकी हेजमनी खत्म हो चुकी है। सार्क में पाकिस्तान लीड करेगा, लीड करेगा और बाकी तमाम ममालिक श्रीलंका, भूटान समेत हम ऊपर जाएंगे। और जिस तरीके से ये लोग सप्रेस कर रहे थे, अब ये सप्रेशन खत्म हो जाएगी। इसी तरीके से जो मैं इसको बैलिस्टिक मिसाइल्स का जो हमारा मामला है, वो तो जबरदस्त तरीके से आगे जा ही रहा है। इस मामले को मैं आगे किसी और वक्त में बनाऊंगा। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात है कि बांग्लादेश ने दरसी किताबों के अंदर जो अपनी उनकी एकेडमिक किताबें थी, उनका सेहरा जो है वो मुजीबुर रहमान से छीन लिया। अच्छा, अब जो इंपॉर्टेंट बात है, हिंदू वोटर्स की बात मैं आज नहीं करने लगा, और जो मैं बात करने लगा वो ये है कि चीन ने बांग्लादेश को अमेरिका की सरबराही में तश्कील दिए जाने क्वाड्स के इत्तेहाद में शमूलियत से खबरदार किया था, हसीना वाजिद को उस माने में। सो आज जो है वो हालात तब्दील हो चुके हैं। लेकिन अब मैं तेजी के साथ आपके पास वो आता हूं कि जिसमें दिफाई और तिजारती मुफादात है। सबसे पहले आप एक कमेंट ले लीजिए या मैं पहले बात कर लेता हूं कि बांग्लादेश दिफाई आपकी इस बात के हवाले से कमरुज़्ज़मा साहब, when this regime change took place, we heard that the Americans were interested in that St. Martin Island, and that's why everything happened. How correct is that story? We haven't seen any American activity in Bangladesh afterwards, so it seems pretty hard to believe now. Actually, we see just the normal relation between Bangladesh and the US, and it was actually Sheikh Hasina was hugely seen to say this, but we didn't find any that type of proof that that island located near Myanmar. US is interested to capture that island. We didn't have any that type of proof till now. And the interim government also didn't say anything about it, but Sheikh Hasina actually, when US was opposing Sheikh Hasina as the farcical elections and other undemocratic activities, especially when the Human Rights Watch and other the Western-based rights organizations issued different statements regarding the rights violations here. Then Sheikh Hasina actually circulated it very widely with the media that US is opposing her because US demanded St. Martin Island and Hasina was not ready to do that, so US is opposing. But actually it's not true according to information we have till now. Right. Well, and there was another issue between India and Bangladesh that was of river waters. They were releasing flood water unannounced, which destroyed properties and crops of Bangladeshi farmers. Yes, actually. Yes, that was a huge issue, and there are also reports that India is also building a dam to stop the flow of water into Bangladesh. Yeah, it's a long problem for Bangladesh. Actually, the 5 decades back, India first put barrage on the Ganga and Podda river, that is Farakka Dam. And due to that dam, the water flow of most of the major rivers coming from the Himalayas and entered Bangladesh through India, the flow of water was stopped, and now even there is desertation in the whole northern region of Bangladesh. The environment and the ecology has totally been changed. And even now, in Tista River, that was a very strong river. Depending on that river, the agriculture and the ecological system was functioning in the northern region. But that is now like a desert. So on 53
common river, India put barrages. That is without any concern from Bangladesh and even without following the international river law. So that is very unfortunate, and Bangladesh has not getting the proper ratio of water through those rivers, and due to the diversification of water by India, during the dry season we don't have any water, and even during the rainy season. What is the arrangement? Water, then Babu Sahab, what is the arrangement between India and Bangladesh regarding these rivers? Do you have any understanding, any treaty with India that they have to allow a certain amount of water flow inside Bangladesh? Yes, there is treaty on Ganga River. Okay, but according to that treaty, there is also allegations and reports that India is not following that treaty properly, and even nothing to surprise really. Yes, and Bangladesh has been trying for long to make a treaty on the Tista River, but unfortunately, the issue is hanging on balance for many decades, and even till now there is no treaty. And several times when Sheikh Hasina was the Prime Minister, it was claimed that Bangladesh and Indian relationships on the highest level. But unfortunately, whenever the issue of signing treaty on the Tista River, India raised so many issues. For example, the Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee, is opposing it. We experienced the same thing, Babu Sahab. We experienced the same thing in Pakistan when there was a pro-Indian government in Pakistan. India built Kishan Ganga Dam in violation of the Indus Water Treaty. Then later government in Pakistan took the case to the World Bank and they lost the case there. Yes. So that is the position. They have a history of violations. Yes. So people actually really. People are so much unhappy at the unfriendly attitude and harmful activities of India that always go in disfavor of Bangladesh. So Bangladesh expect the behavior, logical behavior, and if India wants Bangladesh's friendship, India must act accordingly. But they must stop bullying other people. They must stop behaving like a regional bully. That is what is required. Yeah, of course. You cannot be friends with a bully, can you? Yeah, of course. Yes. In this civilized world, people never expect that type of behavior. Yes, because indeed. now there is a flow of information technology, so people are not fool now. No, nobody's a fool. We know what has been happening. Dr. साहब, ये सिचुएशन है आपके सामने, हमारे सुनने वाले भी देख रहे हैं, जो मर्जी बातें करते रहे. ये है रियलिटीज. और यहाँ पाकिस्तान में आप जानते हैं हमारे यहाँ एक पूरी टीम तैयार की गई, इंटेलेक्चुअल्स की, यूनिवर्सिटीज के अंदर फंडिंग की गई इस किस्म की रिसर्चेस कराने के लिए, जिसने ये सारा झूठ यहाँ पे तमाशा लगाया. एक और झूठ, एक और मिस नैरेटिव, एक और जो एक झूठ घड़ा गया इंडिया की तरफ से डॉक्टर यूनुस की जानिब, उन्होंने बड़ा क्लियर किया, जिसके ऊपर ये बयान को समझ नहीं पा रहे. मैं इस बयान को क्लियर करता हूँ. डॉक्टर यूनुस का बयान की सिर्फ ये स्टेटमेंट दिया है, जिसको कमरुज़्ज़मा साहब भी सेकंड करेंगे. उन्होंने कहा कि बांग्लादेश का मवाजना, यानी आप कंपैरिजन जो है वो अफगानिस्तान से ना किया जाए. अब उसका सियाको सवाक यानी उसका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करें, और वो मैं सबको समझा दूं. उन्होंने कहा कि भारत को ये बात समझना होगी कि शेख हसीना वाजिद के बगैर भी बांग्लादेश में इस्तेहकाम पैदा हो सकता है. शेख हसीना वाजिद इज नो मोर नीडेड. No more needed. She was the Indian puppet. She was the Indian puppet. अच्छा, अब बांग्लादेश के जो चीफ एडवाइजर और अबूरी वजीर आजम, जिसका बहुत प्रॉब्लम है इनको, डॉक्टर द ग्रेट डॉक्टर यूनुस, आई ऑल्सो ऑलवेज रिस्पेक्ट हिम. डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने कहा कि भारत की क़यादत तवातर से ये तासुर पैदा कर रही है, यानी नैरेटिव बिल्ड कर रही है, करने की कोशिश कर रही है कि बांग्लादेश अब जुनूनी इस्लाम पसंदों के हाथ में है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है. वहां पर कोई जुनूनी नहीं है. ये इनकी फेवरेट लैंग्वेज है. टेररिस्ट आ गए क्योंकि ये जनूनी हिंदू थे. ये जनूनी हिंदुत्व है, ये जनूनी मुद्दता है. ये पाकिस्तान, ये इस्लाम में ना जुनून है. इस्लाम सिर्फ ला इकराह फिद्दीन, इस्लाम में ना तंगी है, ना सख्ती है, ना जुनून है, और सिर्फ पीस पीस पीस, टॉलरेंस टॉलरेंस टॉलरेंस
and coexistence and coexistence. आगे सर, भारतीय क़यादत जो बाइडेन और इंतजामिया और यूरोपीय ममालिक पर भी जोर दे रही है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों की मजम्मत करें, हिंदुओं पर कोई हमला नहीं हो रहा। और ये मैं चाहूंगा कि प्लीज इस सवाल को दोबारा से बनाकर कमरुज़्ज़मान साहब से पूछें कि ये जो झूठ घड़ा जा रहा है और बाइडेन इंतजामिया को कहा जा रहा है कि हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ये गलत narrative. You have 8% Hindu population, and there was huge propaganda in Indian media that their shops were torched, they were burnt, their houses were attacked, their properties were destroyed. Is that all correct? No. Yes, it's completely false. Yes. Completely false. As a field reporter, I have had the opportunity to visit many parts, and even I have made many stories on it with the comments of Hindu leaders. So actually, even the Hindu leaders who are very gentle and who thinks who respect Bangladesh as their motherland, even they are opposing this propaganda, and they are also claiming that even on record before the camera, they says that actually by doing this, India is doing harm for the Hindus here in Bangladesh. Actually, India is not worried about the Hindus here. India actually want to ensure its puppet government here so that it can continue its hegemonic policy and one-sided benefit from this country, from the market. So that is the main target of India. So whatever or however Hindus are living here, it's not their main headache. So even the Hindu people who are very gentle, they are not even, they don't like this type of propaganda by Indian media or Indian government. There will be no Indian hegemony in the region. We stand with you. We stand together. Rest assured. Yes. Dr. Saab, मेरा ख्याल है कि आप conclude कर दीजिए. Abdul Saab, thank you very much for your time today. It was a pleasure talking to you. Pleasure talking to you. That's why I was on travel and there was technical problem. No problem. No problem. We will talk again and again. Congratulations. We come together again, and we will be, and everybody will see that our participation in the SAARC would be the world best power in the world. Inshallah. Thank you very much, Dr. Saab. Have a safe travel. Yeah, thank you. Good Hafiz. Yes, डॉक्टर साहब. सो देखिए, ये सिचुएशन निकली है. सारा किस्सा जमा तफरीक करके 50 साल यहाँ पे क्या तमाशा होता रहा, क्या बातें होती रही, पाकिस्तान फौज को कैसे मलाइन किया गया, कैसे कैसे गंदे इल्जाम लगाए गए, और आज भी इंडिया में ये बैठ के बातें करते हैं हमारे सिपाहियों के खिलाफ जिन्होंने वहां पे किया, और जिन हालात में हम जानते हैं कि आज जो अमेरिका में इंडिया के साथ जलालत हो रही है, इनकी अपनी लॉबिंग, अपनी हिपोक्रेसी, अपनी बेईमानी, ये चुगलियां, गीबत, ये सारी की सारी जो बातें हैं, आज इनकी पोजीशन ये है कि उन्होंने कारपेट खींच लिया है. ये जिसकी पोजीशंस में बैठे थे, ये जो अडानीज एंड अंबानीज बने हुए थे, वो खिंच चुका है. ये जो सीईओज लगाए गए थे, ये ब्लैक रॉक की वजह से, और ये मुख्तलिफ इजराइल के मामलात के अंदर जो मामलात कर रहे थे, इन्होंने तो इजराइल के साथ भी जो है वो पैसे तो ले लिए, लेकिन काम नहीं किया. अब इन्होंने जब उसका जवाब तो मांगे कि इजराइल के साथ जो इन्होंने कमिटमेंट की थी वो पूरी क्यों नहीं की. तो ये सवाल बनता है ना. फिर पूरी करेंगे. मैं चले आज आपसे इजाजत चाहूंगा. इफ यू वांट टू ऐड समथिंग. मैं सिर्फ आखिरी बात कर दूं. इंपॉर्टेंट बात ये है कि बैनुल अक़वामी जो ताल्लुकात के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि नई बांग्लादेशी यानी डॉक्टर यूनुस की हुकूमत ने ये भारत से टेलीकॉम का वसीउल बुनियाद जो मुआहदा मनसूख कर दिया है. खत्म, फिनिश. अब तमाम मुआहदे पाकिस्तान की तरफ से होंगे, और पाकिस्तान से होंगे, और चाइना के साथ होंगे. लद्दाख पर मैं सिर्फ एक हिस्से के ऊपर बात करना चाहता हूं, और उस चीन के ऊपर कि भारत को जो सरहदी तनाज़ा था, मैं मुसलसल कह रहा था कि अकासी चिन के ऊपर ये बात करना नहीं चाह रहे थे ये जो हिंदू हैं. प्रॉब्लम ये है कि वही जो है ना, वो जब तक वो पीते नहीं है ना, वो तब तक उनका दिमाग काम नहीं करता. समझने की बात है. नहीं, मैं बताना चाह रहा हूं कि इंपॉर्टेंट बात यह कि बीजिंग ने होतान, अब एक तो अकासी चिन्ह के अंदर मैंने बताया कि 26 पेट्रोलिंग पॉइंट में से 25 पहले ही ऑलरेडी उनके थे. फिर इन्होंने बताया कि इन्होंने बात तय हो गई है. तय तो हो गई. हुआ क्या,
बीजिंग से होतान और ये जो है प्रीफेक्चर में लद्दाख के कुछ हिस्से शामिल करके वो नई काउंटीज के क्याम का ऐलान कर दिया। ये आपको पता है, कल बताया मैंने आपको। नई पेशरफ में मोदी हुकूमत जो है वो पागल हो चुकी है, इस वक्त बिल्कुल पागल हो चुकी है, उसके पास कोई जवाब नहीं है। बस उनके जवाब में उनकी प्रेस कवरेज इतनी सी आई है कि इन्हीं लोगों ने ले लीला है दुपट्टा मेरा। ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इन्हीं लोगों ने ले लीला है दुपट्टा। ये रक्स करेंगे, ये सर घुंघरू डाल के नाचते रहेंगे, बस और कुछ नहीं कर सकते सर हमारी तरफ से, हमारी कला से। आप फिर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और रियासती काउंसिल की मंजूरी के बाद होतान, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, होतान पर प्रीफेक्चर में हयान काउंटी और हेकोंग काउंटी के क्याम का ऐलान कर दिया है। और हयान की काउंटी का सेट जो है वो जो होंकियो टाउनशिप है, जबकि हेकोंग का काउंटी का सेट जो है वो जेडाउन लॉ टाउनशिप है। ये दो काउंटी जो है वो अब डेवलप हो चुकी हैं। अच्छा, इन काउंटीज में 81 चिन्ह के इलाके का एक बड़ा हिस्सा शामिल है। आपको याद है, मैं एक पूरे साल से 81 चिन्ह कह रहा हूं कि इंडिया के साथ बहुत बुरी होने वाली है, बहुत बुरी होने वाली है, लद्दाख में लग पता जाएगा। आज ये बड़ा हिस्सा 81 चिन्ह में से उन्होंने खींच लिया है। एंड चीन की जानिब से यह ऐलान 5 साल बाद सरहदी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के चंद दिन बाद किया गया। और भारतीय कौमी सलामती के मुशीर जो है, जो मुझे बहुत पसंद है, अजीत देवल, वो ऑफेंसिव ऑफेंस स्ट्रेटजी, वो विल क्रश योर ऑफेंसिव ऑफेंस स्ट्रेटजी, हाउ डेयर यू। अच्छा, अब जो है वो कहते थे कि जो अजीत देवल ने गुज़श्ता माह बीजिंग का दौरा करके सरहदी इलाकों पर मुज़ाकरात किए और उन्होंने कहा चलो फारिग हो जाओ। अच्छा, भारतीय वजीर खारजा ने जुमा को बीजिंग के खिलाफ एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया था। वो एहतजाज वही वाला था, इन्हीं लोगों ने ले लीला है, नहीं एहतजाज रिकॉर्ड करवाया सर, इन्हीं लोगों ने ले लीला है दुपट्टा मेरा। बस ऐसा कर। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश, इसके बाद की आने वाली हुकूमतें, हमारे मिलिट्री ताल्लुकात तो हैं, लेकिन ये आगाज है पाकिस्तान और बांग्लादेश के सफारती ताल्लुकात का। डॉक्टर यूनुस ने अपनी फॉरेन डायरेक्शंस तय कर ली हैं, एंड डॉक्टर यूनुस डायरेक्शनलेस डायरेक्शन नहीं है। चाइना के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं और वो ना अमेरिका के साथ बिगाड़ेंगे, बल्कि वो नैरेटिव ठीक करेंगे जो इंडिया ने गलत कंस्पायर करके खराब किया है। ये ताल्लुकात बेहतरीन होने जाएंगे। और आप ये एक और बात मेरी आज लिख लीजिए कि पाकिस्तान, बांग्ला और चाइना ये बेहतरीन किरदार अदा करेंगे और आप देखेंगे कि अमेरिका इनके साथ बेहतरीन ट्रेड के ताल्लुकात में आएगा, ना कि किसी किस्म की जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप लोगों ने देखना शुक्रिया। गुड नाइट, पाकिस्तान जिंदाबाद।